So good afternoon to all. Myself Sunil MK from NST Chennai. So today our topic is inheritance in Java. Okay, before going to the topic, so we will just discussion about the inheritance. This word is, I think, very familiar. Hereditary inheritance, just like that. So suppose if you are discussing about just our family. So family members, we are discussing about the family, what we are telling. So he's just looking like his father, and she is looking like his father, her father, like that. So हम फैमिली बारे में, परिवार के बारे में डिस्कस करने के टाइम क्या है, समटाइम्स हम बोलेगा ओ पापा की तरह है, ओ मम्मी की तरह है, ऐसे बोलेगा. उसका मतलब क्या है, हमारा पेरेंट्स के some features, some properties, some characters we are getting. Okay, so that is the just we are telling it by hereditary we are getting something. So these type of features, we are using in Java. So just what is the why we are using this in the Java means nothing but the reusability of the code. और reusability के लिए हम inheritance property we are using in Java. So that is the today's topic, inheritance. So we will go one by one the slide. So what is the inheritance means? So inheritance is this is the process by which one class acquires the properties and functionalities of another class is called inheritance. So one class is getting the properties and functionalities of the another class. So what is the property means nothing but in a class we are defining sometimes data members or sometimes instance variables or sometimes functionalities. Functionalities means functions or methods. So that is using by some other class. So this is the inheritance. So एक क्लास है, क्लास का अंदर some properties है. Properties का मतलब क्या, क्लास का अंदर थोड़ा सा instance variable है और sometimes of method है. वो method है ना, दूसरा class use करेगा. So that is the inheritance. So the aim of the inheritance means nothing but to provide the reusability of the code, so that a class has to write only unique features and rest of the common properties and functionalities can be extended from another class. So actually, so what is the situation means? Sometimes we are in a developing in an application, so we are defining one or two classes. So the defining time, what we are doing, so all the classes are sharing some common properties means, so that we are defining a separate parent class. The common properties, so repeating it is not good, so we are defining a separate class for common properties. And the remaining thing, so remaining classes just accessing the common properties. So that is the advantage means, so code reusability. Okay. So the inheritance is one of the key features of the object-oriented programming. So that allows us to define a new class from an existing class. So that is the concept. Okay. Why we are using the inheritance means nothing but this is the code reusability. So the same code, so for all class there is no need to repeat. Okay, the common properties we are writing or we are declaring only once, that we are using to some other classes. So in this case we are defining some super class, subclass, etc. So what is the super class means? The class whose feature we are inherited is known as the super class. So that means first I discussed na papa ki tarah ho or bachon ki tarah. So here super class means our parents. Okay, so that is the super class type. So parents we are getting some characteristics. So super class ka jagah mein, so parents है. Okay, and ask what is the so suppose if you are familiar with, आपको C++ मालूम है means उधर हम क्या यूज करेगा, बेस क्लास, पेरेंट क्लास ऐसे बोलेगा, बट जावा में हम यूज सुपर क्लास बोलेगा. Okay, so that is a both are same है. You are thinking about the CPP, C++ and Java means both are super class means the same as the parent class or base class in the CPP. The same concept. So next, what is the subclass? Subclass means the class that inherits the other class is known as the subclass. Okay, so subclass means our previous what I first I told, it is just like a parents or
children's. So here it is the children. That is, it is sometimes we'll call as a child class, derived class. So that is the subclass. The subclass can add its own field and methods in addition to the superclass field. So just your imagine as a parents, we are getting some features. Suppose just like we are our character, or just like our face is just looking like our father. And but we have also some special character. Just like in Java, in subclass, we are inheriting something from the superclass plus addition some features that is we are independently declaring in the subclass. So this is the superclass and subclass. Okay. So once again, that is we are just using the some classes, some common features we are defining in some classes, and that is using to the particular classes. So that is the common class, what is super, commonly known as the super class. That is the parent class, and we are some properties inheriting and taking to some other class. That class is known as the subclass or child class. Okay. So how in Java we are doing this inheritance? For that purpose, so we are using the keyword extends. Okay, extends is the keyword we are using for the inheritance. So what is the syntax means? The class, after that our subclass name, then the extends keyword, and after that the superclass. So that is the syntax in Java. So inheritance syntax is clear now. So first is the class, class is the keyword. After that subclass, subclass means any valid identifier, that is the name of our subclass, that is inheriting the properties from the superclass. And after that we are using the extends keyword. Extends is a keyword, reserved word in Java. Then from which class we want to inherit the things, that is the superclass. There also a superclass name, it is also a valid identifier. So after that, normally class bracket is opening, then closing inside methods and fields. So that is the syntax of the inheritance. So next, okay, for an example, so we are just considering about the animals. So all the animals have some common properties. So just like eat, sleep, etc. So that means all animals are like that. All animals are eating, all animals are sleeping. So what is my aim is I want to create a separate class for different animals, just like dog, cat. So if I am using this inheritance, I don't want to repeat these all common properties. Common properties once I have to defining as a animal class, and I am storing all the common properties there. Then particularly, suppose I am going for defining a dog means from the animal class, I am taking this common features. Clear enough? Animal is a common property. So common properties means just like animals have, they are all animals are eating and all animals are sleeping. So that means it's a common for all animals. So that is I am defining as a super class. Its name is animal. Next, I want to define a particular animal, that is a dog. So I'm taking this eat and sleep from the animal and some special dog's quality, that is dog is barking. So that is I am separately defining in the dog class. So here animal is the super class and dog is the subclass, and dog is inheriting the properties of the animal class. Here what is inheritance means, the dog class is taking the eat and sleep. Now the concept is clear. I think the concept is clear. What is a superclass? What is a subclass? The common features we are defining in the superclass, and the subclass is inheriting that one. Okay. So this a complete example is like this. So animal is the superclass. So animal, it is the sleep is there. Then the subclass is the dog. There it is bark, dog special quality, particular only for dogs. And finally, in main class, I am making the object of the dog, and I am taking all these features. All these features means eat, sleep, bark, everything. Because the dog subclass is inherited the animal class. That is why eat and sleep is available for the dog. Okay. For how to defining in Java, this means first I am defining the class animal. Okay, the class is animal. So inside the class eat and sleep method,
and the further going to the dog. So dog class I am defining class dog. Dog is a subclass that I am using the keyword extends. So extends animal. So this animal is the superclass and dog is a subclass. And inside the dog class, I am just defining the bark method. Okay, bark, that is a dog's property, dog's feature, bark. So this is the inheritance. So the complete program is given here. So that is the animal. So inside the animal, there is a eat method. Inside the eat method, the thing but I am printing I can eat. The same kind, there is a sleep method. So there is a printing I can sleep. So that is animal classes. Our super class is closing here. Okay. And next what we are going here is the I am defining the subclass dog. That dog here I am using the extends keyword and using the superclass animal. This meaning means the dog class inheriting the animal class. Okay. So inside the dog class I am defining one is method bark. So this method is for only the dog class. And inside the bark method, there is a just printing I can bark. So that is a dog's feature. So here what is happening means the dog class is inheriting the animal class so that this eat and sleep will available in the dog class. So I will show you the program. Okay, I think this your program is visible. Okay, I will try to use Hindi language. I think this program is visible. I think you can see now this program. Okay, इधर हमारा यस थैंक यू इधर हमारा क्लास है पेरेंट क्लास है एनिमल है इसका अंदर दो मेथड है सो ईट एंड स्लीप ओके सो एक क्लास ऐसा पेरेंट क्लास है इसका हम जावा में कॉल करेगा क्या इसका नाम है सुपर क्लास है सो नेक्स्ट इसके बाद एक क्लास इधर इधर से इधर तक ये फिनिश किया था सो सेकंड क्लास इधर से शुरू किया था इधर से फिनिश किया था सेकंड क्लास का नाम क्या है डॉग है so this dog class किया गया inherits the animal class so I am using the extends keyword इधर okay so that is the inheritance so उसके बाद ये डॉग क्लास का अंदर एक बार्क मेथड है बार्क मेथड क्या है मींस ए डॉग का मेथड डॉग क्लास का मेथड ये दोनों एनिमल क्लास का मेथड अभी इधर इनहेरिटेंस है इसलिए ये दोनों ऑटोमेटिकली इधर मिलेगा सो फाइनली आई एम जस्ट क्रिएटिंग another class so this class is nothing but is for just creating the ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए एक और क्लास इधर बना दिया उसका क्लास का नाम है माई इनहेरिटेंस उसका अंदर एक मेन मेथड है सो मेन का अंदर पहले में डॉग का एक ऑब्जेक्ट बना दिया सो इधर डॉग वन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डॉग उसके बाद इधर देखो सो कैसे एक्सेस किया था डॉग वन डॉट ईट सो डॉग का डॉग मीन्स ये क्लास है ये क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करने के बाद मैं ईट कॉल किया था ईट इसका अंदर है वो ईट ऑटोमेटिकली इधर मिलेगा क्यों मीन्स मैं इधर एक्सटेंस कीवर्ड यूज किया था इसलिए ये दोनों इधर एक्सेसिबल है इधर अवेलेबल है सो डॉग वन डॉट ईट कॉल किया था उसके बाद डॉग वन डॉट स्लीप कॉल किया था उसके बाद डॉग वन डॉट बार्क अभी हमारा डॉग ऑब्जेक्ट के साथ मैं 3 मेथड कॉल किया था ओके एक मेथड डॉग का अंदर है बट पहले दो मेथड दैट इज ईट एंड स्लीप और दोनों डॉग का अंदर नहीं है बट मैं इनहेरिट किया था इसलिए ये दोनों इसका अंदर मिलेगा ठीक है सो नेक्स्ट व्हाट आई एम डूइंग आई एम जस्ट कंपाइलिंग दिस प्रोग्राम so I want to share this command prompt I think command prompt is visible so I'm just compiling this one so my program name is my inheritance okay so I am compiling Java C
myinheritance.java. Okay, it's compiled. Next I am running. Okay, you can see the output. I can eat, I can sleep, I can bark. So eat and sleep from parent class. Super class say eat can meet eat. I can eat is defined in the super class method, and I can sleep is also the super class method. But I can bark means it is in the subclass method. So वो तीनों हमने कॉल किया था. Clear है ना? अभी I think the program is clear. So eat and sleep दो मेथड है हमारा सुपर क्लास का अंदर है. सो मैं इधर एक्सटेंड किया था. सो एक्सटेंड करने के बाद इसका अंदर एक और मेथड है. ये डॉग क्लास का सेपरेट मेथड है. सो बाद में मैं एक और क्लास बना दिया. उसका अंदर मैं ऑब्जेक्ट बना दिया डॉग वन. और डॉग वन यूज करने के बाद ईट कॉल किया था, स्लीप कॉल किया था, बार्क किया था. इधर देखो ईट एंड स्लीप. दिस इज द इम्पोर्टेंट. ईट एंड स्लीप मीन्स व्हाई दिस इम्पोर्टेंट मीन्स वो दोनों मेथड इसका अंदर नहीं है, बट इधर है, पेरेंट क्लास में है. मैं इनहेरिट किया था इसलिए दोनों इधर मिलेगा, इसलिए मैं इधर कॉल किया था. सो दैट इज द इनहेरिटेंस. सो नेक्स्ट I think almost idea is clear. What is the inheritance? So how you are getting the properties. So next is the type of inheritance. So there are different types of inheritances available in Java. So that is the first one is the single inheritance, and the second one is multi-level inheritance, and third one is the hierarchical inheritance. So these three types of inheritance are available in Java. So normally, if you are familiar with any type of that is CPP means C++, there is another one more inheritance is there, that is a multiple inheritance or एक और hybrid है. So hybrid inheritance is also there. But in Java में ऐसा कुछ नहीं है. So inheritance तीन प्रकार है Java में, that is a single inheritance, multi-level inheritance and hierarchical inheritance. आपको कोई CPP C++ मालूम है means उसके अंदर again two more is है, that is just like a multiple inheritance and hybrid inheritance. But Java में वो दोनों नहीं है. Java में तीन है, single inheritance, multi-level inheritance and hierarchical inheritance. Okay, next we will go one by one. So what is a single inheritance means? Just now I explained one inheritance. So that is the example for a single inheritance. Single inheritance में क्या है? एक सब क्लास है, वो सब क्लास हमारा सुपर क्लास से फीचर्स इनहेरिट करेगा. So that is the single inheritance. Okay, so is the image में देखो, A is a class and super class and B is the subclass. A का प्रॉपर्टी B का अंदर मिलेगा. So that is just इसके पहले एक एग्जांपल डिस्कस किया था ना, एनिमल और डॉग. The same example है, same thing is a single inheritance. Okay, only one level. एक सुपर क्लास है, एक सब क्लास है. So that is a single inheritance. So again I want to show you this as example. So that is so your class A is defined. That is class A is containing two variables ij and इसके साथ एक और मेथड है show ij. So what is इसका पर्पस क्या है मीन्स दोनों i and j दोनों प्रिंट करने के लिए एक मेथड है, दैट इज द क्लास A. सो उसके नीचे एक क्लास डिफाइन किया था क्लास B. सो दैट क्लास B एक्सटेंड्स A. सो दैट मीन्स वो ए क्लास का इनहेरिट किया था. सो इसका क्लास B का अंदर क्या है, एक इंटीजर k डिफाइन किया था. उसके बाद एक मेथड शो k. ये शो k का वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए एक मेथड. सो बाद में लास्ट एक सम मेथड है. सम का यूज क्या है मीन्स वो तीनों वेरिएबल ऐड करेगा. वो तीनों वेरिएबल ऐड करेगा मीन्स आई जे के. बट इधर देखो आई जे नहीं है इधर, बट इधर आई जे है. हम क्या किया था, इधर एक्सटेंड किया था दो, सो दोनों इधर मिलेगा. सो दैट इज द
inheritance. Okay, so ये class A पहले क्या है? class के पहले means उसका starting में I है, J है, show I J, तो तीनों इसका member है. Okay, so एक बार एक्शन करने के बाद, एक बार एक्शन कौन एक्शन किया था? So class B, that means class B inherits the class A. उसके बाद class B का member देखो, class B में I available है, J available है, K available है, show I J available है, show K available है, sum available है. ये तीनों I J show I J वो तीनों हमारा क्लास A का मेंबर है, बट हम इधर क्लास B एक्सटेंस A यूज किया था, दैट मींस इनहेरिट किया था, इसलिए वो तीनों इधर ही मिलेगा, क्लास B में मिलेगा. ये दोनों अलग अलग है. एक बार इनहेरिटेंस हैपन मींस सो इसका एक कॉपी क्लास B में अवेलेबल है, ये कॉपी अलग है, ये कॉपी अलग है. So why inheritance we are using means so reusability of the code. Okay, so for example, you see this is the program. So I J define किया था, show I J method is available here. So that is our first class, that is our super class or parent class. So after that class B is declared, and the class B I am using the extents for inheritance. I am inheriting the class A, this class. Okay, so class B का अंदर indicate वो class B का K है, उसका अंदर एक मेथड show k का यूज किया, जस्ट प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ k. सो देन एक सम मेथड है, सम मींस इसका यूज क्या है? आई एम जस्ट एडिंग आई जे के, ये तीनों वेरिएबल आई जे के ऐड करने के लिए. सो ये आई जे ये दोनों इधर से इधर आएगा बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस. सो बाद में मैं एक क्लास क्रिएट किया फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए. सो दैट इज माई इनहेरिटेंस 1. ओके, माई इनहेरिटेंस 1. सो इसका अंदर पहले मैं एक का एक ऑब्जेक्ट बना दिया. एक का ऑब्जेक्ट मींस ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसका नाम है सुपर ओबी, सुपर ऑब्जेक्ट, दैट इज सुपर क्लास ऑब्जेक्ट. उसके बाद मैं आई के एंड जे के दोनों का दो वैल्यू दे दिया 10 एंड 20. सो उसके बाद सुपर आई जे में और मेथड कॉल किया था. सो ये पूरा कोड इधर से किधर मैं कमेंट किया था. अभी फर्स्ट स्टेप में देखो, मैं एक क्लास ए सुपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट इधर बना दिया, उसका नाम है सुपर ओबी, सुपर ऑब्जेक्ट, सुपर क्लास ऑब्जेक्ट. सो वो ऑब्जेक्ट यूज करने के बाद आई एस एस किया था, जे एस एस किया, आई का वैल्यू 20 दे दिया, जे का वैल्यू 20 दे दिया. बाद में आई एम जस्ट प्रिंटिंग द कंटेंट्स ऑफ द सुपर ऑब्जेक्ट. सो आई एम जस्ट कॉलिंग द शो आई जे मेथड. ये शो आई जे इसका अंदर है सुपर क्लास. अभी पूरा सुपर क्लास का टच किया था. ओके, सुपर क्लास ऑब्जेक्ट बना दिया, सुपर क्लास वेरिएबल एक्सेस किया था, सुपर क्लास मेथड कॉल किया था. ओके, वी विल जस्ट सी हाउ टू व्हाट इज द आउटपुट. सो मेरा प्रोग्राम का नाम है माई इनहेरिटेंस 1. सो आई एम कंपाइलिंग. So my inheritance 1 is compiled. So next I am running. So Java my inheritance 1. So I think it is very clear. The contents of super object is there, and I and j variable it is 10 and 20. Okay, it is I think it is very clear. So again I will go back to the program and so you see the program. So now I just called this ing and show j method. So the second stage mein, so what I am doing, I am creating the subclass objects. So that is the subclass here means class B. So I am making the object of class B. That is the here class B sub. This is a subclass object. I am representing by sub OB. So after that I am accessing I J K. उसके बाद
by using sub object, I am calling show ij and show k. Okay. So up to this, I'm using. So I am commenting here. ओके इधर देखो पहले मैं क्या किया था एक सुपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया वो प्रिंट किया था वो फिनिश है नेक्स्ट क्या मेरा प्लान क्या है ये सब क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया तो दैट इज अ सब ऑब उसके बाद मैं आई एक्सेस करेगा जे एक्सेस किया के एक्सेस करेगा इधर देखो इधर ओनली के है बट मैं हमारा ये आई जे हमको इधर मिलेगा बिकॉज ऑफ ये लाइन एक्सटेंस ए बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस वो कंप्लीट करने के बाद मैं सब ऑब्जेक्ट यूज करने के बाद शो आई जे कॉल करेगा सो इधर क्या है इसका अंदर से शो आई जे प्रिंट करेगा सो इसका अंदर का शो आई जे का वैल्यू 7 8 है पहले हम एक 10 एंड 20 दे दिया वो इसका अंदर का काम करेगा ओके सो 7 8 एंड 9 सो तीनों हम प्रिंट करेगा सो फॉर दैट पर्पस आई एम यूजिंग शो आई जे विथ रेस्पेक्ट टू हमारा सब क्लास ऑब्जेक्ट एंड हियर एक और मेथड है शो के दैट आल्सो आई एम कॉलिंग विथ रेस्पेक्ट टू सब ऑब्जेक्ट ओके सो आई एम सेविंग द प्रोग्राम उसके बाद कंपेल करना चाहिए okay so first compiling and running now you see so here what is the first output ing 10 and 20 ये दोनों में सुपर क्लास ऑब्जेक्ट बेस्ड है सब क्लास के ऑब्जेक्ट में क्या है INJ का वैल्यू 7 and 8 है ओके सो इसका मतलब INJ अलग अलग है सो एक INJ सुपर क्लास में सेकंड INJ सब क्लास में है ओके वो दोनों अलग अलग में ट्रीट करतेगा इनहेरिटेंस मींस ओनली दैट फॉर कोड रीयूजेबिलिटी बार बार में कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है हमको एक बार लिखने वो बाद में यूज करेगा सो दैट पर्पस वी आर यूजिंग द इनहेरिटेंस सो this ing पहले ing means oh only available that is in the super class and second ing so that is in the subclass and k is that is we are already defining in the only in the subclass only so now I think this concept is very clear and again we will go back and see this program so बाद में मैंने को एक और मेथड में पेंडिंग है so inside the my inheritance that is the inside our B class that is the sum method okay इधर एक sum method है ना बाद में मैं वो भी कॉल किया था sum method okay saving the program तो sum method कुछ नहीं है क्या है ये तीनों वेरिएबल ऐड करना चाहिए so that is the sum method okay so we will go to again compare and so compiling next running so output is that is the first INJ that is a based on super class object the values 10 and 20 in the subclass INJ is the values 7 and 8 this is the super class INJ variable that is 10 and 20 and the subclass 7 and 8 so here the case that is only defined in the subclass that is 9 so after that we are just added this all ing that is 7 plus 8 plus 9 तीनों add किया था उसके बाद 24 हमारा output now I think what is the idea is very clear so what is the inheritance inheritance बारे में क्या है हमको code reusability है so that is a code reusability means the values are different only the code we are using okay again we will go back to our screen next what is the relation between this access specifier and inheritance here just before previous हमारा previous exam में हम क्या किया था पूरा इसमें का अंदर क्या क्या डिफाइन किया था और पूरा सुपर क्लास में क्या क्या डिफाइन किया था और पूरा सब क्लास में अवेलेबल है now if you are using the different access specifier का मतलब क्या so already हम डिस्कस किया था public private protected like that and default also there if there is a no access specifier is not specified means it is a default access specifier
and if it is a public means that will available all the places, and the private means that is available only in the one class. Which class it is defined, only that class only private is available. Okay, so now how it is affecting the inheritance. So a subclass includes all the members of its superclass. It cannot access those members of the superclass that have been declared as a private. now clear है ना? Suppose हमारा सुपर क्लास में एक प्राइवेट मेंबर है, so वो मेंबर इनहेरिटेंस में सब क्लास में नहीं मिलेगा. Okay, if you suppose in our super class one member is declared as a private means that private member is not available in the subclass. Okay, so class member that have been declared as a private will remain private to its class. It is not accessible by any code outside its class, including the subclass. So the private restriction is, it's a very clear, it is a most restricted access specifier. एक बार हमारे एक member private ने declare किया means वो सेकंड क्लास में नहीं मिलेगा. इवन इन द केस ऑफ सब क्लासेस नॉर्मली इट्स नहीं मिलेगा, बट आपको ये इनहेरिटेंस का टाइम वो नहीं मिलेगा प्राइवेट में. सो यू जस्ट सी द एग्जांपल. See this example here. क्लास ए में सेम एग्जांपल में इंड आई डिक्लेयर किया था. इंड का पहले कुछ नहीं है, so before the int there is nothing is there, that means it is a default one. So default का मतलब it is as a same package, it is just like a public. So this is acting as a public now because it is a default. Now the second variable that is int j, the second variable देखो that is a j, उसका पहले क्या है, एक प्राइवेट है. इसका मतलब ये j वेरिएबल प्राइवेट है, वो ये क्लास का अंदर मिलेगा, उसका बाहर नहीं मिलेगा. ओके, सो बाद में मैं एक और मेथड यूज किया था, दैट इज सेट आई जे मेथड. सेट आई जे का यूज किया है मीन्स, सो दिस आई एन जे इनिशियलाइज करने के लिए सेट आई जे मेथड यूज किया. ये एक्स वेरिएबल आई में आएगा, ये वाई वेरिएबल जे में आएगा, वाई का वैल्यू जे में असाइन करेगा. सो दैट इज क्लियर ना? दैट इज आवर, दिस इज आवर सुपर क्लास. ओके, so next, so what I am using another class B. So class B is extends A. So that means this is the inheritance. You are inheriting the class A. Here I declared one so one variable total. So that is also just like a default one. Then there is another method sum. एक और method sum है. Sum का अंदर देखो total is equal to I plus J. Okay, I'm just use this J here. J इधर private है, but I इधर use किया था. Okay, so बाद में I'm just making a in inheritance 2 class में I'm just making the object of the subclass and calling the set ij and calling the sum method. Okay, here what is what I used this private is only available here, but I just for inheritance, after inheritance I used here. Inheritance के बाद मैं इधर use किया था. Okay, you will see what is the output. So my class name is, it is my inheritance 2. So I'm just compiling. Okay, my inheritance 2. You see, it is showing some error. Okay, this is the error. J has a private access in A. So total ij में इधर I plus j use किया था. J is declared as a private member. So that is why error. Now it is clear है ना? If you are private also, inheritance के बाद में नहीं मिलेगा. Clear है ना? That is J as a private. That is why इधर error है. That error is, they are representing error here. So we had to change our program. So change, how to change the program? So actually my aim, I want to add ing. So this just adding means, so I'm here declaring one method. So one method means I want to just return the
So here I'm adding one more method. So that is method is nothing. Nothing means I want to just taking the value j outside this class. j का j प्राइवेट है ना, हमको प्राइवेट बाहर नहीं मिलेगा, इनहेरिटेंस के बाद नहीं मिलेगा, ये प्राइवेट j का वैल्यू इधर चाहिए. सो इस चीज के लिए मैं एक मेथड डिफाइन किया था, दैट इज द वैल्यू ऑफ j मेथड. सो उसका रिटर्न टाइप देखो इंटीजर है. So I am returning this j. J is integer. That is why integer return type I am returning this j. So now this method is default है. Access specifier is default है. उसका मतलब क्या है? ये इधर मिलेगा, ये मेथड इधर मिलेगा. So what I am doing? So that method I am just accessing here. ये j का जगह में I am calling that method. Okay. So value of j is a डिफॉल्ट मेथड है. डिफॉल्ट मेथड में इधर यूज करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो आई एम यूजिंग हियर दिस वैल्यू ऑफ j. सो सेव करने के बाद मैंने को कंपेल करना चाहिए. ओके, इट्स कंपेल्ड. So I'm running. Now it is coming as a total. Okay, total is 22. दोनों ऐड किया था. So I think now it is clear. So what is the access specifier? What is the problem of private? So here the private is there means so private members not available after the inheritance. Inheritance के बाद private member subclass में नहीं मिलेगा. For that purpose मैं एक method introduce किया था, वो method इधर call किया था. So बाद में हम sum call किया था, हमारा total इधर sub dot total. Okay, so that is the access specifier and inheritance. So again, going back to our slide. So next is superclass variable, how to reference a subclass object. A superclass object can be reference a subclass object. For that purpose, so what we are using our earlier example, box example, that example. So here we are using. So I think it's a previous class we discussed this box and the box weight. Okay, so again we have to go for this example. You see, so there is a class box. So class has three variables, that is width, height, depth. So that is the features of the class. So inside the class there is a our constructor. So this default constructor, there is no argument. So default में it is a -1 assign किया था. That means the box is not initialized like that concept. Okay, there is no parameter. So second constructor, that is this is the constructor overloading. Second constructor में क्या है? So तीन variable double h, double w, double h and double d. So this three variables h, w, h, d. ये तीनों हमको ये width, height, depth initialize करने यूज किया था. Okay, बाद में एक और method है volume. So that is nothing but to find the volume of a box. Okay, so this is our super class box. इसका अंदर दो constructor है, box constructor and a parameterized box constructor. So after that there is a volume method. Okay, so next I am inheriting this class to another class, that is the box weight. So this is a common feature for all box. Every box have a width, height, depth is there and volume is there. Next I am adding one more additional features. This is the real use of the inheritance. So the common features I am defining the box class. इसके बाद, so next I am defining a subclass, that is the box weight. I am adding one more features of the box, that is a weight. So for that purpose first I am defining box weight that extends the box, that is inheriting the box class. Okay, that means
These all things are available in the this class. So there what I am doing, the same process is repeating. There is a for box weight as a constructor. Here one more additional variable, that is a weight. That is also representing the weight. Sorry, that is also representing the double. And after that, I am using a constructor and initializing these all variables. Okay, so this is now the box class is our super class, and the box weight class is our subclass. Okay. So the box class is getting, so this all the features here, box weight class is getting all the features of the box. Then here there is no additional method, nothing is the, so बाद में मैंने एक और क्लास बना दिया, that is my inheritance 3. So इसमें what is the use of this one is, so this is just making an object of box weight. So that is object name is weight box, and the width, height, depth, that is 357, and giving weight also here. Then we are calling the volume method. So here there is no such volume, but we are inheriting the box class. Here volume is available, that volume we can use here. So that is the this one. Okay, so then I'm just printing the volume, and after that I am printing the weight. Okay, this is the first step. Clear है ना? So अभी हमारा common features है, common features of a box है. So that is once again I am repeating, common features of the box ये वाला है. So इसका अंदर दो constructor है, एक volume method है. Okay, so ये finish करने के बाद मैं second class, this is my subclass है, subclass box weight है, और extends method use extends the box. Okay, that means box class is inheriting here, and इसका अंदर मैं एक और वेरिएबल डिफाइन किया था वेट करने, वेट के लिए. सो बाद में एक कंस्ट्रक्टर ये पूरा इनिशियलाइज करने के लिए, बिकॉज हमारा ये तीनों वेरिएबल इधर मिलेगा और तीनों इनिशियलाइज करना चाहिए. सो इधर हम यूज किया था. ठीक है. सो फिनिश करने के बाद हमारा थर्ड क्लास, तीसरा क्लास है माई इनहेरिटेंस. ये क्लास का जॉब क्या है? सो नथिंग बट जस्ट मेकिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ है. दिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, इसलिए एक और क्लास डिफाइन किया था. हमारा मेन का अंदर बॉक्स वेट क्लास का पहले एक ऑब्जेक्ट वेट बॉक्स ऑब्जेक्ट बना दिया बाय यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर. सो इस कंस्ट्रक्टर अंदर मैं 4 वेरिएबल पास किया था, दैट इज विड्थ, हाइट, डेप्थ, उसके बाद वेट. ओके, सो बाद में हम वॉल्यूम मेथड कॉल किया था. वॉल्यूम मेथड एक और बार, वॉल्यूम मेथड इधर नहीं है, बट इनहेरिटेंस के बाद ये वॉल्यूम मेथड, ये बॉक्स का अंदर वॉल्यूम मेथड इधर मिलेगा, इसलिए मैं वॉल्यूम मेथड इधर कॉल किया था. सो देन बाद में वॉल्यूम प्रिंट किया था. सो दिस इज द फर्स्ट फेज. सो वी हैड टू कंपाइल दिस प्रोग्राम. So our program is my inheritance 3. Okay, I just compiled. There is no error. So I am going to running this program. Okay, now it is clear. The volume of weight box is given, and the weight of the weight box is given. Okay, so now again going back to what is the main thing, I will again show you. Again going back to this program. So okay, this object, you see this object is weight object, means the object of this class. This class containing this variable available है and this method available है इस class का अंदर. Okay, so now what I am doing, I am creating the object of a super class. Our super class is box. So I am creating an object of the super class box, plain box, that is new box. So plain box is the my object.
Clear है ना? This is the plain box. Plain box is the super class. Super class का object है. Box is our super class. इसका object है plain box. Now what I am doing, the plain box is, the weight box is assigned to the plain box. Okay, weight box is means हमारा subclass का object है. Okay, this subclass का object में वेट बॉक्स इस हमारा सब क्लास ऑब्जेक्ट है. ये सब क्लास ऑब्जेक्ट है सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट में असाइन करना चाहिए. इस रेफरेंस में असाइन किया था. नाउ क्लियर है ना? सो प्लेन बॉक्स इज आवर सुपर क्लास. प्लेन को मेंबर लेस है कंपेयरिंग टू द वेट बॉक्स. मेंबर लेस है इन द प्लेन दिस बॉक्स. इधर दिस वेरिएबल है, ये मेथड है. इसका अंदर क्या है? एक एडिशन, एक वेट है. ओके, इधर पूरा ये पूरा मिलेगा, उसके साथ ये भी मिलेगा इन बॉक्स वेट में. बट बॉक्स में ओनली दिस ओनली अवेलेबल. बॉक्स वेट में ये भी एक्स्ट्रा मिलेगा. दैट इज बॉक्स वेट इज मोर मेंबर कंपेयरिंग टू द बॉक्स. बॉक्स वेट का अंदर ज्यादा मेंबर है कंपेयरिंग टू बॉक्स क्लास. क्लियर है ना? नाउ इधर क्या किया, पहले में एक बॉक्स वेट का ऑब्जेक्ट बना दिया. बॉक्स वेट मीन्स बड़ा है. ओके, एंड उसके बाद अभी मैं क्या किया था, इधर एक प्लेन बॉक्स, बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट बना दिया. बॉक्स इज छोटा है कंपेयरिंग टू बॉक्स वेट. बट मैं क्या किया, बाद में ये बॉक्स का ऑब्जेक्ट में बॉक्स वेट का ऑब्जेक्ट असाइन किया था. दैट इज प्लेन बॉक्स में वेट बॉक्स असाइन किया था. ये तो बड़ा है वेट बॉक्स, ये बड़ा, ये छोटा में असाइन किया था. इसमें ज्यादा वेट बॉक्स में ज्यादा मेंबर है, बट प्लेन बॉक्स में इतना मेंबर नहीं है. बट मैं असाइन किया था. सो बाद में मैं प्लेन बॉक्स विद यूजिंग द प्लेन बॉक्स आई एम कॉलिंग द वॉल्यूम मेथड. ओके, सो दिस लाइन आई एम कमेंटिंग. सो बाद में बाय यूजिंग द प्लेन बॉक्स इज अ बॉक्स का ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट. आई एम कॉलिंग द वॉल्यूम मेथड एंड आई एम प्रिंटिंग द वॉल्यूम. Okay, this last line you just don't consider this one. Okay, now you consider up to this point. Up to this is okay. Okay, here what I did, the plain box से हमारा बॉक्स क्लास का छोटा ऑब्जेक्ट में इसमें बड़ा ऑब्जेक्ट असाइन किया था वेट बॉक्स के. एंड बाद में आई एम प्रिंटिंग द वॉल्यूम. कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम इसका अंदर है, काम करेगा. ओके, वी विल सी. आई एम सेविंग द प्रोग्राम एंड कंपाइलिंग. Okay, so you see there is no problem, it is executing. This is by using the subclass object, and this is by using the box class, that is a plain box object. There is no problem, it is working. Okay, so the now it is clear. It is clear that so we can assign the subclass object to a superclass object. Okay, so you can assign a subclass object to a superclass object. From this example it is clear. So the last line of this program, so I'm just removing this comment. Okay, this last line of this program you just see here. I am by using the plain box dot weight and just printing the weight by using the plain box, by using this object. This box का अंदर weight नहीं है, weight इधर है, box weight का अंदर है weight. But मैं इधर क्या किया, by using the plain box I am trying to print the weight. Now you see it will work or not. So okay, again I am compiling this program. Now you see, so what we are getting, so there is an error. Okay, plain box dot, there is an error. The variable weight, the symbol is variable weight, the variable plain box of a type box. So that is why, so you can assign in a superclass object, we can assign a subclass object, but only
the superclass members only will work. Subclass members will not work. So that is, this example is indicating this thing. Okay. So once again, you coming to this code. So this is the superclass object and this is the subclass object. Subclass में ज्यादा member है, superclass में member कम है. But इधर में क्या किया था, ये superclass में एक subclass में subclass assign किया था. Superclass object में एक subclass assign किया था. Okay. So this is possible है, but उसका अंदर subclass में superclass में क्या क्या है वो execute करेगा, subclass का member नहीं execute करेगा, इसलिए इधर error आएगा. Okay. So this is regarding superclass, this reference regarding the superclass object and subclass object. Okay. So actually today what we are discussing means the first we are starting with what is a inheritance. So inheritance is nothing but it is a class acquires the properties and methods of another class. Okay. So here there is two things are there. Superclass is there, subclass is there. Superclass is just, it is known as the parent class. Okay. And subclass is it is a child class. So whenever we are executing in the Java, we can use inheritance by using the extends keyword. By using the extends keyword in Java, we are performing the inheritance. And next in Java, there are three types of inheritance is there. And the first one is the single inheritance, and the remaining two, that is some multi-level inheritance and hierarchical inheritance, that we will discuss in the next class. So okay, and so far we are discussing this kind of these things. So if you have any doubt, you please ask. Sir, we can only access the parent class to child class, no child class to parent class. Just a minute. Where is who is asked that question? Manav. Okay. Yes, yes. Yes, Manav. What? Sir, we can What's your only doubt? access. Sir, we can only access parent class to child class, not child class to parent class. No, it is not possible. We can only access only from parent class to child class. From super class, from super class to sub class we can access. Yeah, super class to sub class we can access. Others it is not possible. So while once you are extending means automatically one is going as a parent and one is a child. Is okay. And next, only in Java, sir, only three types of inheritance, sir. Single, only three. multiple, single, multiple नहीं है, multi level है. Multiple C++ में available है multiple. Java में only multi level and hierarchical है. In C++ में multiple है, hybrid है. वो दो extra दो है C+ में. ये Java में only three है. Okay. So others doubt? सर Doubt means आप हिंदी में पढ़ा दीजिए एक बार. You just put your doubt in the chat box. So my phone number is 740120945. So if you have any doubt or any request means you just call this number or the WhatsApp 740120945. And this is only a first part of the class. So I will take the second part this end of this week or next week. Okay, through Nimi portal you can get the ID. And PPT also I will share. If you have to just through WhatsApp I will share. You just send a message, I will. So my number is 740120945. Okay, I think today's class is clear, and you just go through this again once again. And if you have any doubt, you next class I will repeat the continue this inheritance once again.
So we will clear the doubt next class also. So next class through Nimi portal, you just watch Nimi portal. I will schedule the end of this week or in next week. Okay. Thank you.